class 12th. So after the discussion on electric potential and potential difference, now we are going to start the derivation part. Means today we have to do a very good derivation, and this is electric potential due to a point charge. Why we do this? क्यों करते हैं? So here first of all we will find the estimation, means what is the magnitude of electric potential due to a point charge. कि एक point charge को सिंपल से एक पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. व्हाट इज द वैल्यू मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट. ओके, बट व्हाट इज द एक्चुअल मैग्नीट्यूड. अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, यूनिट चार्ज नहीं पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वहाँ पर हमने यूनिट चार्ज Q इक्वल्स टू 1 लिया, बट यहाँ पर कोई एक सर्टन सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट चार्ज है, उसकी कुछ सर्टन वैल्यू है. तो उसको जब इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो लुक एट हियर द कंडीशन क्या है वो देखते हैं. सो लुक एट हियर प्लीज़, दिस इज़ अ सोर्स चार्ज Q. इस पॉइंट पर हमारा सोर्स चार्ज रखा हुआ है एंड दिस इज़ अ पर्टिकुलर लाइन. Here the point P, we have to calculate the electric potential, and our particular charge is coming from infinity. जहाँ पर सोर्स चार्ज का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है वो प्लेस हो जाती है इन्फिनिटी. ओके, नाउ वी आर डू द डेरिवेशन पार्ट. अगर हमें यहाँ पे डेरिवेशन करनी है, सो वी एज्यूम दैट वन पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज Q नॉट wants to come at point P. इस सोर्स चार्ज की फील्ड में आना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. बिकॉज वी न्यू दैट फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन ऑटोमेटिकली Q नॉट does not come towards to the point P, because Q here also a positive source charge and Q not also a positive point charge. So that the reason heavy repulsion is there. So we have to apply one against force. ओके, सो नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Q नॉट का जो फील्ड है, दिस इज अ Q पॉजिटिव, जो Q नॉट फील्ड है यहाँ पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर F. नाउ हियर अब Q नॉट को मुझे इसकी फील्ड में लेके आना है. कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ. लुक एट हियर, डेरिवेशन का मेन पार्ट लुक एट हियर. हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टैच चार्ज को इन्फिनिटी मीन्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड is nowhere. Okay, so electric field will be at the P point, but what happened, the particular test charge is coming from infinity. So now हमें कोई particular आपसे कहे कि okay, can you shift this particular object whose weight is 150 kilogram. So first of all हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हम इस कैपेबल हैं इस काम को करने के लिए. सो लाइक दैट वी आर फर्स्ट, हम डेरिवेशन का जो मेन बेसिक पार्ट होता है हर एक डेरिवेशन का यही है, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं. तो टेस्ट करने के लिए हमें एक इन पर्टिकुलर पाथ के अंदर हम एक पॉइंट A कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट कंसिडर B कर रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज हैवी रिपल्शन आ रहा है, थोड़ा एक सर्टेन अगेंस्ट फोर्स लगा कर देखें. सो वैन वी अप्लाई द फोर्स, अब जब आप टेस्ट भी करते हैं कि पहले मैं इस पर्टिकुलर 150 ऑब्जेक्ट को उठा तो लूँ. ओके, सो वहाँ पे ऐसा नहीं कि अपना हाफ सर नहीं, अभी तो मैंने अपनी एक ही हाथ का यूज़ किया है ना. फोर्स तो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमने ये कहा था उसको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए. अभी आपने केवल उसको उठाया है, बट फोर्स तो पूरा लगेगा. इसलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर कंसेप्ट कभी भी पार्शियल नहीं होता है. जो फोर्स होता है पार्शियल नहीं होगा, फोर्स तो पूरा लगाओगे. अटेंशन पार्ट में भी फोर्स पूरा लगेगा. हाँ, आपने वर्क नहीं किया बिकॉज आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना था, भी आपने उठाया है. दैट द रीज़न यहाँ पे जो वर्क डन होगा पार्शियल होता है. इसलिए डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, dF विल बी इक्वल्स टू dW विल बी इक्वल्स टू F and multiply with displacement. Suppose now the test charge is moving from A to B and the displacement here is dx. Okay, so now we can say here the distance from Q to P is r, and from Q to point A is x. Okay, and
क्यू नॉट को सबसे पहले हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और ए पॉइंट सबसे पहले चेक करके देख रहे हैं। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट करना है। अब जब पूरा का पूरा जब हम इसको क्यू नॉट को पी पॉइंट पर लेके आएंगे, दैट मीन्स टोटल वर्क डन हो जाएगा। उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, सो नाउ हियर इज सोर्स चार्ज and here is test charge. So first of all, the main force acting between is electrostatic force, and how we can calculate electrostatic force? By the Coulomb's law. Okay, so according to Coulomb's law, the force between capital Q and Q naught is F equals to K capital Q Q naught, and the distance between them is x square. Give the equation number 1. Now in this condition, according to the definition of electric potential, a particular work done to take the unit positive charge from infinite to the particular electrostatic field which is generated by source charge. Okay, so definitely here we have to do some work done, and first of all, by the testing purpose, right now we are going to shift this particular Q naught test charge from A to B, and for that force पूरा लगेगा ना, so that here now what happened, look at here please, the particular वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट। अब पूरा वर्क डन कब होता, जब आप इसको टेस्ट चार्ज को पी पर शिफ्ट करते हैं, बट अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, ए से बी पर शिफ्ट करके देख रहे हैं। सो वर्क डन क्या होगा, पार्शियल वर्क डन, दैट द रीजन वी हैव टू नोट डाउन डी डब्ल्यू। ओके, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एफ डॉट डी एक्स, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो पार्शियल, बट फोर्स तो पूरा लगेगा ना, बताया मैंने, फोर्स तो पूरा लगाओगे। ओके, सो एफ dot dx. Okay, now look at here, we are taking the test charge, means point charge, towards to Q, and the particular against force is capital F. ये source charge against force लगा रहा है। See, the direction of F is just opposite of this one, so we can say source charge, and due to the heavy repulsion force, Q naught does not come towards to the capital Q. हैवी रिपल्शन फोर्स लगेगा, इतनी जल्दी आसानी से Q नॉट पॉइंट चार्ज को कैपिटल Q नॉट अपनी फील्ड में एंटर नहीं होने देगा। ये पर्टिकुलर टास्क ऐसा ही है, जब पर्टिकुलर कोई स्पेसशिप अर्थ से स्पेस में जाता है, दैन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जब स्पेस से वो अर्थ की फील्ड में एंटर करेगा। सो दैट द रीज़न काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है स्पेस से अर्थ की फील्ड में एंटर करने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर द कल्पना चावला केस। ओके, नाउ हियर व्हेन वी ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। नाउ से वाई 180 डिग्री, बिकॉज हियर द पर्टिकुलर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन and we have to apply the displacement sorry in this particular opposite direction। तो force तो against repulsive force लग रहा है और displacement opposite करना चाह रहे हैं। okay, so that the reason here we can say it is minus f dx। give the equation number 2. it is a partial work done, means here we just shift this particular test charge from A to B। Now the main task, we are going to shift this particular Q naught test charge at the particular electrostatic field. Okay, so now after the partial work done, what is our main task? How we can calculate the total work done? So we can calculate the total work done, just simple apply the integration process over the equation number 2, because it is a partial one. So that the reason integration is a very important tool in physics. So now for total work done on Q naught to shift from infinity to point P. Okay, simple way. So now here we can say integral over the equation number 2, this one,
will be now limit. Now our test charge is coming from infinity to the particular electrostatic field, means at the point P, the distance here it is r, and it is infinity. So lower limit is become infinity and upper limit is r. Now according to that one, f dx. Now we are going to apply the value of x from the equation number first. So we can do like that, minus k capital Q small q naught upon x square dx. Now see the integration, sorry, here also limit infinity to r. Now minus k capital Q naught and integration over r, infinity to r, and 1 upon x square dx. This one we can also note down, k capital Q naught and integral over infinity to r x inverse square dx. Now we are going to apply the power function rule. So we know that x of n dx will be equals to x n plus 1 and plus 1, because this integration is a definite integration, so no need to apply the constant, already we have a limit. So now implies that w, when we do the integral over the partial part or differentiate part, so main variable will come here. So w will be equals to k, where is my minus? Yeah, minus, okay, minus k capital Q naught. Now we are going to apply the integration, so we have to remove the sign of integration. So now x n plus 1 upon n plus 1 over infinity to r. Now we can write minus of k capital Q naught, and this one is x minus 1 upon minus 1 r to infinity, then k capital Q naught minus, and this minus and minus become this minus and this minus become plus. So we can write again this x inverse, again 1 upon x infinity to r. Now we are going to apply the limit, so implies that w will be equals to k capital Q naught, and first of upper limit 1 upon r, then lower limit. In the mathematics we know that 1 upon infinity will be 0, okay. So here k Q naught and only 1 upon r is remaining, so we can write here w will be equals to k capital Q naught upon r, if the equation number this one third, okay. So now this is a particular work done on Q naught to place this particular charge from infinity to that particular electrostatic field. But what is electric potential? How much potential required? So by definition of electric potential V equals to W upon Q naught. So from the equation number third, you can put the value of W. So K capital Q naught upon R by Q naught. This one is cancel out. So what is remaining? V equals to K capital Q upon R. So here we can write the electric potential due to a point charge is V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Okay. Now very interesting thing here. What is the interesting thing? In the electric field concept, look at here please. In the electric field, here we can write KQ upon R square, means electric field is inversely proportional to R square. It's also follow the inverse square law, and the potential also you can see V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. So V is inversely proportional to R. So sometime in the examination they can also ask, please draw the graph which shows the dependency of distance. So we can easily draw the graph there. So I can draw the graph there, like here. This is a particular
distance, here we can take electric field also and potential. Easily draw the graph between that. So here you can take one common point here, 1 and 1. Okay, so first we are going to describe electric field. So it is start like that. Okay, and the electric potential is started from just behind of electric field, like that. So this is a particular nature, or we call dependency over distance for both electric field and electric potential. So here, so look at this question. Two charges 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb are located 60 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges in the electric potential 0 take the potential at infinity to be 0? Okay, so the condition is like that. First we see the solution. We have here one particular here we can consider one charge from A position. It is 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb, and the second charge at B position, it is minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास इसी लाइन पर और इनके बीच में डिस्टेंस है, इट इज 16 सेंटीमीटर अपार्ट. सो वी कैन कन्वर्ट इन मीटर, सो वी कैन राइट 0.16 मीटर. ओके, सो इस लाइन पर, इस ज्वाइंट लाइन पर कहीं इनका पोटेंशियल 0 होने वाला है. सो इन दिस कंडीशन वी कैन सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी 0 इनसाइड द सिस्टम or maybe 0 outside the system. So here we can divide this numerically in two parts. First, V1, electric potential of first one charge, and electric potential of second charge will be 0. The first condition in between. The first condition is in between. Okay. So V1 here, because we know the V electric potential due to a point charge will be KQ upon R. So definitely we can write here V1 plus V2 will be 0, implies that here we can write K we keep outside the first charge 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb upon. Now see the distance. Now suppose at the in between, at the point P, the electric potential will be 0. So here the distance left P to P will be x, and the remaining one will be 0.16 minus x. Okay, so here we can take it as x distance, and here minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb upon 0.16 minus x. Okay, so we can solve, implies that will be also equals 0. So k and 10 raised to the power minus 8 k into 10 raised to the power minus 8 keep out constant. So remaining thing is 5 by x minus 3 by 0.16 minus x will be equals 0. So this term automatically will be 0. Now we can solve, implies that 5 by x minus 3 by 0.16 minus x will be equals to 0. Now after taking LCM we can say 5 0.16 minus x minus 3x will be equals to 0. This thing also be 0 now, denominator. So we can write 0.80 after multiplication of this. 5x minus 3x will be 0. Now here we can write, implies that minus 8x here, and it will be going that side, so 0.80. Now minus and minus cancel out, so it will be
0.8018. Now we can write here 0.10 is meter. Okay, if you want to convert in centimeter तो no problem. So in between means इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं 0.10 मीटर पर जो पोटेंशियल होने वाला है वो जीरो. इट इज अ फर्स्ट कंडीशन. बट इस सिस्टम के आउटसाइड भी जाके कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है. सो इस सेकंड कंडीशन में लीडर इन दिस कंडीशन देयर इज अ charge system. There is a 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. Here the center point, maybe take P, here it is A, and it is B, you take here B point, minus 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. Now see at the point Q, outside of the system, electric potential may be 0. So here we take from the A will be a x distance. Okay, in between we know the distance in between the charge from A to B will be 0.16 meter. So remaining one, the remaining one we can say it is x minus 0.16. Okay, now we are going to solve B part, B1 plus B2 outside of charge system. So now it will be 0. So V1 plus V2 will be 0. This outside. So V1 here same, KQ upon R. So V1 here is 5 into 10 raised to the power minus 8 upon x. We multiply with the k also. Minus 3 into 10 raised to the power minus 8. We will also multiply with the k. Upon the distances we can say x minus 0.16 would be equals to 0. Now k and 10 raised to the power minus 8 keep out outside. So 5 upon x minus 3 upon x minus 0.16 will be 0. So now we can solve. V1 plus V2 will be 5x minus 3 upon x minus 0.16 will be 0. Implies that after taking LCM we can write 5x minus 0.16 minus 3x will be 0. So implies that 5x minus here it is again 0.80 minus 3x will be equals to 0. Minus 3x will be equals to 0. So here we can write 2x minus 0.80. So x will be 0.80 by 2. We can cancel 0.40 meter. So just outside of the system at the distance 0.40 meter, maybe potential will be 0.